Shreya, are you feeling comfortable right now? Yes, definitely. Okay, if you want take some time, then you can. Then we will start. No, sir, it's fine. You can start. It's fine. Okay, so Shreya, just introduce yourself. My name is Shreya Srivastava. I am from Gorakhpur, Uttar Pradesh. I did my schooling from Gorakhpur only. After that, I did my BTech in Biotechnology from Sri Ram Sarup Memorial University, Lucknow. Then I did my MTech in Biotechnology from Institute of Engineering and Technology, Lucknow. In meanwhile, I cleared GATE Biotechnology. Then I took admission in IIT Patna in PhD program. Currently, I'm doing PhD. Okay, so right now you are a PhD scholar, right? Yes, sir. It's my first year. Okay, it is your first year. Okay, so Shreya, tell me why you want to join this job. That is CGPTM. So CGPDTM, it's a job in which I can use my research ability as well as my uh, administrative. I always wish to work in an administrative job, and CGPDTM provides me using my the career like BTech and MTech knowledge, and it will also allow me to work in an administrative role. So that's the reason I want to work in CGPDTM. Okay, okay. Uh, Shreya, as you have filled in your application form that your area of interest is bioprocess engineering, right? Yes, sir. I only filled one, but like I was not aware that I can fill multiple. But my area of interest is bioprocess, immuno, and additive. Okay, RDT, immuno, and bioprocess. Very good. So Yes, sir. you given me a lot of area to ask so many questions from these topics. It's a very good for me. Yes, sir. So tell, Actually, my PhD is in chemical engineering. I am right now working in chemical engineering and biochemical engineering. So from last 1 or 1.5 year, I'm not in touch in biotechnology that much. But still, these are my favorite so have you areas. completed your PhD coursework? Yes, sir. It's just going on. It's second semester. So two courses are still on. So how are you feeling right now being a PhD scholar? So it's definitely good. Definitely good. Okay, the initially first and the second year will be very good for being a PhD scholar. Then after you will feel so many difficulties in the PhD journey, but it will be the part of the PhD, and you will definitely will be a good person after the having your PhD degree. Okay, so just go ahead and do your PhD. So Shreya, tell me, uh, have you heard about the CO2 incubator? Yes, sir, CO2 incubator, I've heard. Mostly they are used in animal cell culture technologies and for to provide the CO2, like, I don't remember actually, but yeah, it's mostly used in animal cell cultures. That Why much I why remember. in animal cell culture there is a need of a CO2 incubator instead of a normal incubator? Generally in life science laboratory or microbiology laboratory there is a simple kind of a incubator. Okay, Yes, sir. then why there is a need of a CO2 incubator? Is there any specific reason Sir, for that? I don't remember. Okay, in bioprocess engineering, microbiology has a very important and crucial role. Yes, sir. Can you justify this statement by argument by saying some statement in this regard? Why microbes are so important in the bioprocess engineering? So microbes are so important in bioprocess engineering because when we talk about bioprocess engineering, basically we are using microbes as a enzyme or catalyst for any reaction to perform. So that's why the microbial kinetics is very important because if we do not know the basics of microbial kinetics, we cannot design the bioprocess experiments. For designing a good bioprocess experiments, role of microbes is very important. So that's why we need the knowledge of microbial kinetics as well. Can you suggest some five different microbes which are used in the bioprocess engineering for the different purpose, like as production of therapeutic molecules, productions of some beverages, productions of some antibiotic molecules? Can you So suggest some? Okay. the most commonly used is Saccharomyces cerevisiae for production of ethanol. Then we use the strains of Lactobacillus, different strains, for the production of some milk-related products. And
So it's like the best and Okay, good. I'm Shreya, waiting. so many times you have also encounters and also have faced that in microbiology laboratory or any life science laboratory, there are 70% ethanol used for purpose of sterilization, right? Yes, sir. Why only 70%, not 60, 65, or 80 or 85, 95% ethanol? Just only sir 75, 70%. Why? So 70% ethanol is capable to uh, disinfect for sterilization. That is the enough quantity the ethanol required. So generally we use It will 70 be for. further good if the concentration of ethanol is 80 or 75% or 85%. Yes, if as we increase the concentration to 100%, it will be evaporated just like it will be evaporated in within seconds. 70% ethanol stays for a while, so that sterilization can be like easy. So using of 70% ethanol is the main purpose is to sterilize any surface or any object or any glassware, etc. Okay. So if suppose Yes. we are using 70%, if we have 75% or 80% ethanol, so it will be more effective to sterilize the objective surface or glassware, etc. Then why we only use 70%? So I don't know the exact answer, but maybe the cost can be also a reason. If the sterilization can be achieved on 70%, then uh, the cost effectiveness is also important process in bioprocess engineering. So that is the reason we use 70%. Okay, Shreya, there are several methods to keep microbial culture for a long time to preserve. Okay, in laboratory or in a Yes, store culture, etc. Can you suggest some method to store the microbes for a long time? so the general use method is a streak plate method. We make a streak plate and we can keep it in refrigerator for a longer period of time, and we can culture it again and again. So that is the most common method. Okay, have you Most heard about the im- glycerol stock? oh, no, sir. We are prepared for bacterial glycerol stock for the long purpose. Street pit method is enough for the month or 2 month or for 15 days, but you have to store for the year by year. Then you have to store in some liquid media, right? Okay. So you are prepared glycerol stock? No, sir, not yet. Okay. Generally, for the isolation of bacterial species from any sample, like as a soil or water or air, there are a very simple and very common type of a method, that is serial dilution. Serial Okay, dilutions. and for doing serial dilutions, we generally make a solutions of a soil and further dilute it in a normal saline, that is NS, not a simple distilled water. Yes, sir. Why it is Yes, sir. prepared in NS, not in distilled water? Serial dilution. Yeah, the process of a serial dilution is Uh, performed in NS instead of a distilled water. Why? Sir, as much as I remember, I have in my BTech we have done serial dilution in distilled water only. So I don't have idea about this. Okay, In okay, in, in but BTech, good practice is lab to, yeah, but good practice is to prepare lab serial dilution exam very quickly. lab. Yeah, continue. So in lab we used to have microbiology as a subject. So there we did serial dilution using distilled water. So I don't have like I'm not able to answer this question by NS or Shreya, distilled water, can but you I'll definitely read about it. okay? Can you differentiate between the distilled water and sterile water? So distilled water is so sterile water is the water we autoclave for like using in media preparation. Distilled water is the simple water that we take. Like distilled water is also need to be sterilized for using in any media preparation. Okay, that means according to you, distilled water is also having some microbes. That is, there is a need Yes, to sir. be sterilize that distilled water. Okay, Yes, sir. okay. Have you ever heard about the Milky water? Yes, sir. I have heard about it. And what is this? So in Milky water there is no. Suppose you have a three different kind of water, that is distilled water,
milky water, and sterile water. Which of water will act as a good for media preparation for the bacterial growth? So, in milky, as much as I know, in milky water there is no like ions or this kind of things present. But in sterile water there is no living component like present. So we can use a sterile water is Sterile the water best. contain living components. And why? Do not contain any Okay, living okay. components or any. Okay, milky water contain living components. No, so milky water also do not contain any living component. Milky water do not have any ions present in them. Okay. So all the ions are not present in milky water. So So how I you can think distinguish sterile between water milky is. water and distilled water? Distilled water also do not contain any ions. Yes, sir. Then how you can distinguish between the milky and distilled water? Yes, sir. That I Okay, the think. my question. Okay, come to the point. That is, my question was that which water will act as a good for the media preparation for the bacterial growth? That is milky water, distilled water, and sterile water. Sterile water. Sterile water will act good. Sterile water. You are Yes, also a researcher and research scholar. So hopefully you have prepared so many times culture media for the bacterial growth. Can you name some name of the culture media used for the bacterial growth? so culture media. So the most commonly used is nutrient broth and nutrient agar. And And the second we can use is like one second. So let me give yeah, yeah. Take your this time and think about it, bit. and then reply. There is no any burden or no any issue. So we for plant we use MS Media. That much I remember. My question was for the bacterial culture, not For for the plant. bacteria. And right now you have answered two media. That is one is the Na and Nb. Okay, is there any chemically difference of the Na and Nb media? No, sir. In NB media, there is a agar. In NA media, agar is also added, which act as a solidifying agent, and the other components are same in NA. In both Na and Nb. NB other components are same. Only agar is added. Okay, So so right now, I'm not. okay, got it. Suppose you are preparing Na media, then what will the sequence of adding of other chemicals as well as agar? What will the sequence? So Suppose agar is added at the last. okay, At last, after adding all the components. okay, before maintaining the pH or after maintaining the pH? So agar is added after maintaining the pH. After maintaining the pH. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Shreya, move towards immunology or some other topics because I think you are more compatible. You will be more compatible in the immunology. Microbiology and immunology have some interlinked and interconnection because in Yes, sir. so many books we have studied microbiology as well as immunology. How you can justify this statement that there is a link of microbiology in and immunology? Okay, sir. So immunology is basically deals about our immune system, which respond to the foreign particles. That is basically antigens, and antigens are mostly the microbes that is that we study in microbiology. So like bacteria, viruses, these are the major antigens. So I think that Yeah. is the link between Okay. So microbiology yeah, and is it immunology. possible to visualize a microbe or that is bacteria with the naked eye? Is it possible? No, sir, it is not possible. Okay, is there any bacteria reported which can be seen by naked eye without use of microscope? So as per my knowledge, I don't know any bacteria that can be survived by naked eye. Okay.
As you told in your answer, that is, there is a connection between the microbes and immunology, means microbiology, immunology, because most of the time antigens are the microbiology, and all the foreign particles will act as antigens. How our cells differentiate or recognize the particle inside our body, that is, it will act as a foreign particle. How? So basically, the MHC molecules are the molecule that differentiate between self and non-self. So MHC molecule recognize that these are the foreign particles, or it can be recognized by the pattern of the different type of antigens. So our cells can recognize that which pattern is our pattern and which is the foreign pattern. How many different kinds of MSC molecules are present in our body? So basically, there are three types: MHC one, class two, class three. But we generally talk about MHC class one and class two. Class 1 and class 2. So which one is very important in recognition of these foreign particles? Class 1 or class 2? So class two is if we talk about like cell mediated immunity, their class MHC class two molecule plays an important role as the T helper cell uh, uh, in combination with MHC class two induces the B cell to produce antibody. So Okay. Uh, do all cells contain all kind of MSC molecules, or is there any specific cells which contain a specific kind of MSC molecules? so basically, antigen presenting cells contain MHC molecules. So I Okay. think APCs only mostly APCs contains MHC molecule. MSC molecule what? That is second or first? So I think T cell contains B cells contain MHC1 molecule. I think B cells, only B cells. yes, so B cells contain MHC1 molecule. Uh, Macrophages, I don't remember which MHC molecule it contains. Okay. Shreya, in MSC molecule and in CD4 molecules, there is a relation. Can you suggest the Yes, sir. combination of a CD molecules and MSC molecules type, that is CD4, CD8, MSC molecule first, MSC molecule second, T helper cell and T cytotoxic cells? These three molecules have a combination. Which kind of a particular kind of MSC molecules will interact with the Sir, particular kind of, yeah. I need to take a pause for 1 minute. Can we just pause a video for 1 minute? Yeah, yeah. Sure. Okay, so I was asking that there is a combination, there is a group in between MSC and T cell types as well as CD molecules. Can you Yes, sir. can you suggest the group of these combinations, that is MSC molecule 1, MSC molecule 2, and CD4, CD8, and T helper cells and T cytotoxic cells? Yeah. Yes, sir. MHC1 molecule have the combination T. MHC1 molecule have a CD8 cell and TC cells, and MHC class 2 have CD4 and T helpers. Very good. What is the role of a TC and a T helper cells? That is TS cells and TC cells. Okay, so in acquired immunity, when we go for the cell mediated immunity, T helper cell and cytotoxic cell plays the role. C types cytotoxic cells help in the killing the antigens, whereas T helper cells produces some molecules such as cytokines which activate the B cells and produces antibody. So this is the role of T Okay. helper and T That means, cytotoxic. according to your answer, that is T helper cells just only support inactivation of a B cells. It does not have Yes, sir. killing property like a TC cells, right? Yes, sir. Okay. Okay. Uh, can you suggest the name of the antigen which has ability to activate B cell mediated immunity? The type, chemical nature of antigens? Do all kind of So basically,
Basically soluble antigen activate B cells, B cell to produce antibodies. The nature of antigens should be soluble. Okay, means solubility will decide the activation of B cells or T cells, right? If any antigen having Yes, ability to soluble in blood cells, then it will activate B cells, means cell mediated, or sorry, humoral immunity. Otherwise, it will. humoral immunity Okay, sure. activates cell. Yes, Okay, so antibody is one of the key important molecules in immunology. Okay, yes. and antibody plays several role in different kinds of situations in our body. How you look the structure of antibody? What are the different kind of a structural level present in the structure of antibody? So defining about the structure of Yeah. antibody, it is a Y-shaped structure. It has two heavy chain and two light chains. The heavy and light chains are like similar. If we divide it into a longitude, the heavy chains and light chains are similar. They have a variable region and a constant region. The difference in antibody structure occurs basically on the region of variable regions. The heavy chains have certain divided, like it can be the basis of which antibody it will form, like IgM, IgD. It depends on the heavy chain natures. And the light chain also has two particles like kappa, and I think I don't remember the next one. Okay. Shreya, have you heard about the Genome India project? It's a human genome project. Genome in India project. What is this? So are you talking about human genome project? No, no, no. India project. Human Genome Project was older. I am asking about the Genome India project. No, sir, I haven't heard No about idea. it. Okay. No, sir. What is 3I in IPR? So, sorry, sir. 3I. 3I. 3I in IPR. Yeah. I stand for innovation, India, or Innovation, yeah, yeah. innovation, intellectual property right. No, no. There are 3I. 3I. One I stand for innovation, and remaining two are stand for what? So I'm not getting the question. Okay. Shreya, why the Yes, sir. intellectual property called intellectual property? Why not simply it's a property? So intellectual property is basically called intellectual because it is the creation of our mind. So uh, the intellectual property is basically intangible. So that's why it is not called in the normal property. It is called intellectual property. Discovery and innovation. Discovery and Yes, sir. innovation. These are the two terms. Is there any difference between these two terms, or both are the same? No, sir, there is a difference between two terms. Discovery is finding the something which is earlier existing and we just find it out. But invention is something creating a new thing that can be called invention. Suppose you are working in laboratory, being a research scholar, and you find certain molecules in your bacteria. Suppose you are dealing with bacteria or about plant. You find some different new kind of molecules that is secondary metabolites secreted by the plants and involved in certain kind of pathways. So what we call it, that is discovery or invention. So it can be called discovery if we have any steps involved, like if we developed a new process or anything that it produces a molecule, that can be called invention, as Okay. per my knowledge. Okay, okay. In research, there is a need of a, research methodology to fulfill the objective, right? To Yes, sir. conduct an experiment, there is a need of a hypothesis. How you Yes, sir. frame that the step by step to conduct an experiment for the purpose of fulfilling of objective. What will be the steps? Suppose you are going to perform an experiment to
screening of a bacteria for the salinity. Suppose this is the objective for you to screen out the microbes for the salinity tolerance. Then you have to prepare a methodology and you have to prepare a Yes. workflow. Though, then what will be the steps to conduct this experiment? How you So organize? first step Yeah. So first step would be from where we are going to take the bacteria. Either we are isolating it or we are taking the cultures, and then it would be further like on which thing we are going to study. Like we are studying salinity. So sorry, what was the question? Can we repeat? Screening of bacteria for the salinity tolerance. Okay, sir. So we will prepare like adverse condition to mild condition. We can always perform the experiment in different range. Like if we are talking about salinity, then we can take a salinity from mild to high salinity, and then we can design the experiment like how the bacteria would react if the salinity was a little less and then moderate and then high. Then we can study it. So firstly, the where from where we are getting the bacteria, that would be the step, and then how we are going to how salinity we are providing, that in which form we are going to provide the salinity, that will be the, and then we will study the different parameters that will affect not only the salinity but also other factors. That if we are changing the salinity, then what will be the other factors will affect. So in that way, we can prepare the Okay, steps. as you are a research scholar and probably you have heard about the term that is plagiarism. What is this? So plagiarism is the thing defined like if we copy any article without permission, it can be said plagiarism. In thesis and in this type of thing, plagiarism can be defined if like three or four, five consecutive words we have copied from somewhere, it can be called plagiarism. Have you submitted any your articles in any journal? No, certain now. As till now, my research work, like coursework is only going, so I haven't Okay, submitted. okay. Can you tell me two or three journals name of your domain? So nature is one of the nature. Then we Nature can say what? Elsevier. Nature microbiology, nature what? Nature medicine, nature molecular biology, what? Nature, so nature microbiology or nature chemical. Okay. So my topic is microbial fuel cells. Basically, I'm working in chemical engineering department. So my topic would be a mix of biotechnology and chemical. That is microbial fuel cell. Okay. So Elsevier, Springer, Elsevier and journals I are the think publication house, not the journals. yes, sir. These are the publication Sorry, house. fuel, chemosphere. Fuel is one of the general, chemosphere is one of the So, what general. is your target to submit your first research article in what in which publication or in which journal? Sir, I think chemosphere or fuel are the good general in this field, like microbial fuel cell. I've read many papers of the Do you know chemosphere and about the fuel. impact factor? Yes, sir. What is this? So impact factor is of a general, that how much time the general article is cited, and like it is basically based on the citation, that how much impact it has. So that is the impact factor. If a good impact factor, it means it has a high value and it can be referred for a reference purpose. Okay, Shreya, what is the difference in citations and bibliography or referencing? Where we use term the citation and where we use reference or bibliography. Citation and reference. Yeah. So I don't know the exact answer of Okay. citation. Shreya, suppose everybody has two options for their life, that is A and B. Suppose in any conditions, if you are not selected in this examination, and definitely you will continue your PhD. So, what is your goal after Yes. PhD? So definitely I would apply for assistant professor Okay, that means you are looking for in teaching profession. academics. Okay, Yes, in you are academics. interested in the teaching profession. Yes. Why like this? Is there any reason? Are you teaching No, sir. somewhere?
No, no, right now I'm not teaching. Okay. I taught for 15 days or 1 month while I did my MTech, and after that I joined my PhD. In that day I only taught for 15 days or 1 month was the duration. Okay, means So I like, you have confidence and you will feel very comfortable in teaching. Okay. yes, sir, I feel comfortable. So in future, if the suppose if there is any misconductions and you will not get selected in this job, then definitely after some times you will be somewhere as a assistant professor, right? Yes, sir, but I want, like, I wish and I hope that I could get selected only in this exam. Okay, means you are not so interested in doing on your PhD. Okay, you just want to grab a government job and be settled there, leave all this stress. Okay. Okay, Shreya. Nice to talk you. Now it's your turn. Whatever you want to ask to me, that is regarding your interview and your preparation strategy and area of low confidence and area of trouble, etc. So it's open for you. Whatever you want to ask, then you can. Sir, if they ask me what is your favorite subject, where from where we can ask, so which subject should I tell them? Definitely, the answer will depend upon your confidence. That is, suppose like here you mentioned RDT technology, immunology, and bioprocess engineering. Bioprocess. Okay, so among these three subjects, whatever the subject you have more confidence and more concept. Suppose you are more confident about the immunology, then definitely you have to answer immunology. Okay, so uh, it is not sure, it is not compulsory that interviewer will offer this They will question. ask only. Okay, but somehow Yes. you have to mold your interview towards your area for interest in any way. किसी भी तरीके से आपको ऐसा करना होगा, because you will be able to answer few or some more questions regarding this area. Suppose the interviewer will ask RDT technology, why you choose RDT technology, and what is the importance of RDT technology, and what is the different kinds of vectors used in RDT technology, and what is the good properties of the vectors, different vectors, what is the good property Yes, of sir. host cells, etc. So many kinds of questions will be there regarding the RDT technology. Suppose if I ask to you, that is, can you name the some plant vector, then what will the answer? So the most common plant vector is Agrobacterium tumefaciens, Agrobacterium rhizobiums, Okay, that is TI plasmid. Okay. TI plasmid, So definitely you have to prepare TI plasmid, because so many questions will be asked from itself this question, because TI plasmid is Virgins so and common, and in CSIR examinations and any other examinations, there are so many questions have been asked from this particular topic, that is TI plasmid. Like as mechanism of a TI plasmid, the chemical involved in the activation of a TI plasmid vector, right? Why it is called natural genetic engineer. TI plasmid is also called as a natural genetic yes, engineer. Why it is called? genetic Yeah. engineering. So definitely there will be more questions. So आपके सवाल के लिए श्रेया, बेटर रहेगा कि आप जिस चीज़ पे कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा हैं, जिन पे आपको लगता है कि इनका आंसर हम कर सकते हैं, इस सवाल के लिए आप वही आंसर दें। लाइक अगर आपको लगता है कि यू आर कंफर्टेबल इन इम्यूनोलॉजी, देन डेफिनेटली गो विद इम्यूनोलॉजी, और उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। आपका सपोज कब है, 8 तारीख को है इंटरव्यू। Yes, sir. तो अभी आपके Yes, sir. पास आज की नाइट और कल का पूरा डे और नाइट का टाइम रहेगा, मेरे ख्याल से होपफुली कि कल आप निकल जाएंगे। अभी आप कहाँ पे हैं, गोरखपुर? नहीं सर, मैं पटना में हूँ। अच्छा, पटना में है और आपको दिल्ली जाना है, राइट? Yes. तो ट्रेन कब है आपके, कल? नहीं सर, मैंने फ्लाइट कर लिया है, मंडे की फ्लाइट है। मंडे की फ्लाइट है, ओके। तो आपके पास अभी कल का पूरा डे और नाइट का टाइम बचा हुआ है। आप Yes, sir. इन तीनों में, आरडीटी टेक्नोलॉजी में, इम्यूनोलॉजी में और बायो प्रोसेसेस में, इन तीनों में देख लीजिए कि ज़्यादा किस पे आपकी ग्रैपिंग है, जिस पे। सर आपके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन पूछा, तो आपको इन तीनों मतलब आईडीटी से तो उतना इंटरेक्शन नहीं हुआ, इम्यूनो और बायो प्रोसेस से थोड़ा, मेरे ख्याल से तो किसमें बायो प्रोसेस, और अगर आप इम्यूनोलॉजी में पूछेंगे तो इम्यूनोलॉजी आपके लिए बेटर है। इम्यूनोलॉजी? बायो प्रोसेस में ठीक है। आपकी पकड़ थोड़ी अभी कम है, क्योंकि अभी आप शायद पीएचडी आपने स्टार्ट ही किया है, और इससे यस पहले सर। मेरे ख्याल से मास्टर्स में आपने पढ़ा नहीं, राइट? या अगर पढ़ा भी होगा तो उस पर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखा मुझे। मास्टर्स में लाइक वो थ्योरी पोर्शन वाज मोर।
तो डेफिनेटली। वैसा और प्रैक्टिकल हैंड कोशिश गाइड का। कोशिश आपको ये करना है श्रेया कि देखिए, वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई का चेकअप नहीं है। पढ़ यस के सर। लाखों लोग जाते हैं, पढ़ाई हर कोई कर रहा है। आज के डेट में ऐसा कोई नहीं है जो कि स्टडी नहीं कर रहा, जो कि पढ़ा नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है आज के टाइम पे? इंटेलेक्चुअल यस सर। क्रिएटिविटी। जो इंटरव्यूअर है ना, वो आप में ऐसे बुक की पढ़ी पढ़ाई चीज़ों को नहीं जानना चाहते हैं। उन चीज़ों को पढ़ करके कैसे आपसे जो सवाल स्टेटमेंट वाले दिए जाते हैं, आप उनको कैसे आर्गू करते हैं, कैसे जस्टिफाई करते हैं, ये होती है इंटेलेक्चुअल। सबको पता है एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है, ये सब लोगों ने पढ़ रखा है, उसमें कुछ नया चीज़ नहीं है। और ना ही आप नया कुछ पढ़ पाएंगे। जो चीज़ आपको डिफर करेगा वो क्या करेगा, आपका वे ऑफ टॉकिंग इन इंटेलेक्चुअल, कि कैसे आप गिवन सिचुएशंस में गिवन टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, वो फाइंड करते हैं। सो इंटरव्यू में पढ़ाई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आप खुद को लेकर कितना अवेयर हैं, जहाँ पे आप रह, सपोज आप अभी इस टाइम पे पटना में रह रही हैं, राइट? तो पटना को लेकर के आपकी यस सर। कितनी अवेयरनेस है, ये आप पे पता चल जाएगा कि पटना में क्या चीज़ फेमस है। सपोज कोई न्यू अगर विजिटर अगर पटना में जाता है, तो उसे कौन कौन सी दुकान पे आप लेके जाना चाहेंगे, कौन कौन सा चीज़ खिलाना चाहेंगे, क्या चीज़ वहाँ का फेमस है, और वहाँ के बारे में क्या प्रसिद्धियाँ हैं, वहाँ के अभी तक के वहाँ की हिस्ट्री क्या कहती है, कौन कौन से अच्छे ज़्यादा फेमस लोग हैं। ये सारी जनरल अवेयरनेस है जिनका कि जिनसे सवाल आपसे बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं, राइट? पीएचडी आप कर रही यस। हैं, तो पीएचडी से आपके सवाल बन सकता है कि पीएचडी में आपको क्या-क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, पीएचडी को आप कैसे देखते हो, और पीएचडी में क्यों आप पीएचडी कर रही हैं, पीएचडी करने के बाद आप क्या करेंगी? तो ये सब पॉसिबल क्वेश्चंस आपसे बनते हैं, है ना? आप सीजीपीटीएम की ऑफिस में जाकर के जॉब करना चाहती हैं, तो सीजीपीटीएम के बारे में आप क्या जानती हैं? आईपीआर को लेकर के आपकी क्या मतलब थॉट प्रोसेस है, कैसे आप देखती हैं? क्यों आपको लगता है कि आप इस जॉब के लिए सूटेबल कैंडिडेट हैं? हम आपको क्यों सेलेक्ट करें इस जॉब के लिए? इस बात को आप जस्टिफ़ाई कीजिए, है ना? तो ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर आपसे पूछे जाते हैं, और इनसे पढ़ाई से बहुत संबंध नहीं है, है यस ना? सर। बायोटेक में जो सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस का कोई इसमें रोल नहीं है कि आप इस पोस्ट के लिए सूटेबल कैंडिडेट क्यों हैं, इसे प्रूफ कीजिए। आप इसका कोई सिलेबस से मतलब है? नहीं है। पटना में कौन सी चीज़ फेमस है, पटना क्यों फेमस है, पटना का क्या हिस्ट्री है, ये आपकी पढ़ाई से मतलब नहीं है। लेकिन चूंकि आप वहाँ पे रहती हैं, सपोज जैसे राइट नाउ आई एम लिविंग इन वाराणसी, सो अगर मैं कहीं पे स्टेटमेंट देता हूँ कि सर मैं वाराणसी में पिछले कई सालों से रह रहा हूँ, दशक हो गया मैं रह रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो उम्मीद करेंगे ना कि आप बनारस के बारे में बताइए, कि बनारस की अच्छा फेमस यहाँ पे दुकानें कौन सी हैं, फेमस प्लेस कौन सा है, फेमस यहाँ पे पहनावे का कब मतलब पहनावा क्या है फेमस, जिससे कि कोई नया विजिटर अगर आता है तो वो उसको देख करके मतलब लगे कि हाँ अच्छी जगह पर हम आए हैं। तो थोड़ा सा अपने पेरी फेरी में अपने आसपास की चीज़ों को जानते रहिए। पूरी तरीके से सिर्फ सिलेबस पे फोकस होकर मत जाइए। सिलेबस में आपसे जो नॉलेज उनको लेना था वो रिटन एग्जाम में ले चुके हैं। आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया, दैट मीन्स कि सिलेबस पे आपकी पकड़ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब उस जो यस। पकड़ को आपने आपकी जो पकड़ है, जो आपने रिटन एग्जाम लिया हुआ है, उस रिटन एग्जाम में और आपकी जो इंटेलेक्चुअल है, दोनों में मैचिंग करानी है। कि क्या बच्चा सचमुच में इंटेलेक्चुअल है, या सिर्फ किताबी कीड़ा बन करके रह गया है कि भैया वो लिख लिख के पढ़ पढ़ के आया है, लिख के चला गया है। ऐसा हमको नहीं चाहिए। आज के डेट में किसी भी, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर लीजिए, गवर्नमेंट जॉब कर लीजिए, कहीं पे भी सिर्फ पढ़े लिखे लोगों से का काम नहीं है। डील करने वाले बंदे का ज़रूरत है, जो कि जिसके पास डीलिंग एबिलिटी हो, जिसके पास सिचुएशन टैकल करने की एबिलिटी हो, जिसके पास गिवन टाइम में टास्क को कंप्लीट करने की एबिलिटी हो, जिसके पास मल्टीपल चीज़ों को एक साथ में ऑपरेट करने की एबिलिटी हो। सच काइंड ऑफ पर्सन आर नीडेड देयर ना। जस्ट ओनली फॉर यस सर। रीडिंग बुक्स इज नॉट इनफ फॉर नाउ डेज। आपको सिर्फ किताबी नॉलेज से आप अपने आप को कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, अगर आपके पास इंटेलेक्चुअल नहीं है बातचीत करने का, चीज़ों को डील करने का। तो कोशिश ये कीजिए कि जितना हो सके अपने आप को इंटेलेक्ट कीजिए, और किताबी जो नॉलेज है वो आपके पास जितनी है उतनी रहने दीजिए, ठीक है? उसमें बहुत ज़्यादा आप 24 घंटे में आप कुछ कर नहीं पाएंगे। थोड़ी बहुत चीज़ों को अगर देखना चाहें तो आप देख लीजिए, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि जो आपकी मेंटल एबिलिटी है और जो आपका मेंटल स्टेटस है, जैसा कि आप सोचते हैं, आपकी ओपिनियन क्या है ना किस चीज़ को लेकर के, ये बहुत मायने रखती है। और ओपिनियन जो है ना, वो ऐसे किसी के बताने से नहीं आती है। आपकी जो अपनी यस थॉट प्रोसेस हो, सपोज अगर मैं यहाँ पे 2-3 स्टूडेंट और होते, और दोनों तीनों लोगों से सेम सवाल मैं पूछता अपनी ओपिनियन को रखने के लिए, तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट। डिफरेंसेस होगा। और वो डिफरेंसेस उनकी सोच की वजह से है। सवाल तो मेरा वही था,
है ना? तो उस चीज़ को थोड़ा-सा देखना होता है और इंटरव्यू बेसिकली कराया इसलिए जाता है। इंटरव्यू में नॉलेज कोई चेक नहीं करता है, नॉलेज तो सब जान रहे हैं कि सब कोई यहाँ पे आया तो पढ़ के आया होगा। यूपीएससी एग्ज़ाम का आप इंटरव्यू देने जाते हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम में कभी भी कोई यूपीएससी जो सिलेक्शन है ना, उसमें पढ़ाकू बनने की ज़रूरत नहीं है। आप इमेजिन करो कि अगर यूपीएससी एग्ज़ाम को अगर सिर्फ़ टॉपर बच्चे चाहिए हो रहा होता, तो वो सारे यूनिवर्सिटी से, सारे आईआईटी से, सारे आईआईएम से जो टॉप 10 रैंकर्स होल्डर होते हैं, उनको क्या करता वहाँ से कॉल करता डायरेक्टली कि भैया आप आईआईटी मद्रास से हैं, 10 जो बच्चे हैं इस वाले ब्रांच के आ जाओ हमारे पास यहाँ पे। लेकिन उसको सिर्फ़ पढ़े लिखे बच्चे नहीं चाहिए। क्योंकि वो एक पब्लिक में जाकर काम करने वाली जॉब है। आपके पास डीलिंग एबिलिटी होनी चाहिए, कन्विंसिंग एबिलिटी होनी चाहिए। आप कैसे चैलेंज कर सकते हो? सपोज़ कि आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं और आपके सुपरवाइज़र हैं। क्या आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि जिस टॉपिक पे आप पीएचडी कर रही हैं, उस टॉपिक को लेकर के अपने सुपरवाइज़र को आप चैलेंज कर सकें कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं सर? सच काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस इज़ देयर नीडेड देयर। ओके? क्योंकि अगर आप पीएचडी किसी चीज़ पे कर रही हैं, तो आपका नॉलेज आपके सुपरवाइज़र से डेफ़िनिटली होना चाहिए। अगर किसी पीएचडी स्कॉलर में अपने ही टॉपिक को लेकर के अगर अपने ही सुपरवाइज़र से नॉलेज अगर ज़्यादा नहीं, तो बेकार है उसका पीएचडी करना। छोड़ देनी चाहिए उसको पीएचडी। क्योंकि सुपरवाइज़र के पास बहुत सारे काम हैं। सुपरवाइज़र के पास सपोज़ अगर 4 पीएचडी स्कॉलर हैं, तो चारों का टॉपिक अलग-अलग है, अलग-अलग चीज़ पे काम चारों करते का हैं टॉपिक। और वो बैठ कर के पेपर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा काम पेपर पढ़ना होता है पीएचडी स्कॉलर्स का। तो अगर किसी भी पीएचडी स्कॉलर्स के पास अगर इतना गट्स नहीं है कि वो अपने सुपरवाइजर को चैलेंज कर सके कि सर जो आप स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो गलत है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। अदरवाइज आप मुझे गलत करके दिखाइए तो फिर बेकार है पीएचडी करना, छोड़ दीजिए पीएचडी आप। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको कि जो आप बात बोल रही हैं उस पर आपको लोगों को कन्विंस कर लेना है कि नहीं ये चीज़ मैं सही बोल रहा हूँ। आप खुद ही कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे तो दूसरों को कन्विंस आप कैसे करेंगे, है ना? तो वो वाली बात आ जाती है। ठीक है श्रेया, अभी आपको जो सवाल पूछना है आप पूछ लीजिए, और कुछ पूछना है आपको? एक तो आपने सवाल पूछ लिया कि क्या आपको बताना है। ये सर सेकंड ये पूछना था कि आपने डिस्कस किया था ट्रिपल आई इन आईपीआर। जी क्या है ज़्यादा पसंद है तो उस पे तो ये 5 पॉइंट हैं, इन पे थोड़ा आप काम कर लीजिए अपने करंट वर्क पे और अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे, मतलब अपने सब्जेक्ट पे, जहाँ पे आप रहती हैं उस सिटी या उस स्टेट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज, अपने वीकनेस और अपने स्ट्रेंथ के बारे में कि क्या आपकी वीकनेस है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है। सबसे खराब सा सब्जेक्ट आपका कौन सा है, किसको देख कर के आपको डर लगता है कि हम ये सर हाथ जोड़ते हैं सर कि ये हमको पढ़ने के लिए ना मिले। तो कुछ ऐसे जो टॉपिक होंगे उनको थोड़ा फोकस आपको करने की ज़रूरत रहेगी। ये अगर आप इतना प्रिपेयर कर लेते हैं, आपको 1 डेज़ का टाइम है, तो डेफ़िनिटली यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू टाइम, है ना? सिटी हो गया, फेवरेट टॉपिक हो गया, करंट जो काम आप पीएचडी कर रहे हो उस पीएचडी का काम हो गया, आपकी अपनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स हो गई, और डेफिनेटली सीपीटीएम के लिए जा रही तो आईपीआर को थोड़ा सा देख लीजिएगा, इतना काफ़ी रहेगा। यस सर। ठीक है। सर और कैसा था इंटरव्यू, लाइक 1 to 10 आप क्या रेट करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू उसके साथ। इंटरव्यू अगर मैं आपको डिवाइड करूँ श्रेया, तो जैसे कम्युनिकेशंस पे अगर मैं करूँ तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आपकी नहीं है, आप बोल रही हैं ठीक है। थोड़ा सा फेस पे कॉन्फिडेंस का कमी दिखा मुझे, हो सकता है कभी आप मुझसे फर्स्ट टाइम भी इंटरेक्ट हुई हैं मेरे ख्याल से, क्लासेस आपने ज्वाइन किया हुआ था मेंस का, बट नहीं कभी सर। लाइव आपने लिया नहीं। नहीं नहीं सर, मेरी यहाँ क्लासेस होती थी तो मैं लाइव नहीं अटेंड कर पाती आप थी। शायद कोर्स आपने से परचेज किया था, उसको आपने ऑफलाइन पढ़ा था। ओके, तो यस तभी सर। मतलब कभी ऐसे फेस टू फेस आपसे इंटरेक्शन नहीं हुआ था क्लास में। तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको इस वजह से भी हो कि पहली बार इंटरेक्शन हो रहा है, और दूसरा चूंकि आप इंटरव्यू के लिए बैठी थी तो इस वजह से भी कॉन्फिडेंस आपका लूज हो सकता है, बट ये तो वहाँ पे भी रहेगा। तो थोड़ा सा मुझे चेहरे पे आपकी कॉन्फिडेंस की कमी देखी। बाकी अगर आंसर्स की रिप्लाई की अगर मैं बात करूँ तो जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको पता था उन क्वेश्चंस का आंसर आपने कॉन्फिडेंशियली दिया है। थोड़ा सा अगर मैं उस चीज़ को लेकर के रिजिड हुआ तो वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस मुझे कम दिखा। जैसे अगर सपोज मैंने ये सवाल पूछा कि अच्छा ऐसा ही होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप कम कन्विंसिंग दिखी। ऐसा लगा कि जैसे अगर मैं दोबारा अगर इस चीज़ को प्रेस करके पूछा तो आप बोल देते कि सॉरी सर मुझे पता नहीं है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा ओके। कि जहाँ पर आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो इसलिए था कि उन आंसर्स का कॉन्सेप्ट आपको सही से नहीं पता था। जैसे सपोज मैंने यस पूछा सर। कि सीओटी इनक्यूबेटर की ज़रूरत क्यों है ना? यस सर, हाँ, दैट उस आई। चीज़ को लेकर के शायद आपको आइडिया नहीं था।
और दूसरा अगर आए आपके सब्जेक्ट के मतलब आपके नॉलेज पे, तो आपको बायो प्रोसेसिंग में अभी आइडिया थोड़ा कम है एज यस सर। कम्पेयर टू द इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में पकड़ फिर भी आपकी ठीक है, बट मैं आप फिर से आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट नहीं कुछ कर सकती हैं तो जो आपको पीडीएफ नोट्स मिला हुआ है कोर्स का, जब आपने मेंस का कोर्स तैयारी किया हुआ था, अगर वो पीडीएफ फाइल भी इम्यूनोलॉजी का पूरा अगर आप पढ़ लेंगे तो वो मोर देन इनफ है। कोई टॉपिक बचा नहीं है सर उसमें इम्यूनोलॉजी में जो कि छूटा हुआ हो। इम्यूनो का मैंने पूरा वीडियो भी देख रखा है और पढ़ भी रखा है, एक बार मुझे ब्रश अप करने की मतलब लाइक और बिल्कुल आप उसको कर सो लीजिएगा। दैट। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें लगभग ठीक हैं। जिन जिन टॉपिक को मैंने सेलेक्ट किया आपको सजेस्ट किया है, उन टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिए। और ये वीडियो आपको मिल जाएगा, और कोशिश कीजिएगा कि जो जो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं इन वीडियोज़ में, इंटरव्यू में, उनके आंसर्स आप ज़रूर बना लीजिएगा अपने हिसाब से राइटअप में, ठीक है? इसका क्या हो सकता है, क्या अगर आपको फर्दर कोई दिक्कत अगर होती है, तो आप जस्ट सिर्फ मैसेज कीजिएगा कि सर ये वाले सवाल का आंसर मैं नहीं देख पा रही हूँ, आप मुझे इसका बता दिए तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट कर दूँगा, ठीक है? ठीक है सर। बट एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या कंडीशन है, और जो-जो सवाल मैंने करीब जो भी 25-30 सवाल आपसे पूछे हैं, उनमें से बहुत सारे सवाल का आंसर आपने नहीं किया है, तो आप उसको आंसर्स भी यस ढूँढें। सर। ठीक है ठीक है श्रेया? सर। तो सर और एक और ही बात था कि आई हैवंट टोल्ड माय सुपरवाइजर अबाउट दिस लाइक इंटरव्यू एंड ऑल, सो क्या आप वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे? आपके क्योंकि आपके सुपरवाइज़र मेरा यूट्यूब देखते हैं क्या? नहीं आई मतलब लाइक कहीं इधर उधर से अरे सर्कुलेट ना हो इतने बिकॉज सुपरवाइज़र को इतना फुर्सत कहाँ है जी कि वो यूट्यूब पे मतलब न जाने अनगिनत नंबर ऑफ यूट्यूब चैनल्स हैं, और कैसे वो एमएस बायोलॉजी चैनल को फाइंड आउट कर लेंगे? उनको पता थोड़ी ना है कि हाँ, श्रेया एमएस बायोलॉजी चैनल से जुड़ी हुई है, ऐसा नहीं है। इतना डरना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि सुपरवाइज़र को भी ये मालूम है कि अल्टीमेटली बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए तो जाएँगे ही जाएँगे ना। सपोज़ अगर आपके पास नेट का एग्ज़ाम है, या आपने आपने गेट अगर किया हुआ है, तो कहीं पे भी अगर आपके आईआईटी में या असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की रिक्रूटमेंट आई है, क्या आप फॉर्म नहीं फिल करेंगे? फॉर्म तो फिल करेंगे ही, और करना भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़े-से सुपरवाइज़र की मेंटालिटी होती है कि उनके दिमाग में ये बात आ जाता है कि अच्छा बच्चा पीएचडी में कम और उधर की तरफ ज़्यादा सीरियस इंटरेस्टेड नहीं है। है। तो ये चीज़ यस थोड़ा सर। नेगेटिवली दिखाना शुरू कर देता है, ये मैं आपकी फ़ियर को समझता हूँ। ये सबके साथ में होता है नहीं सर पीएचडी। बिकॉज इट्स जस्ट फर्स्ट ईयर माई सो दिस इज द थिंग लाइक अगर थर्ड ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स होता तो मैं बता सकती थी, लेकिन अभी फर्स्ट ईयर है तो वो बोलेंगे आते ही जाने का। तो इस वजह से मैंने अभी करेगा इंटरव्यू के बाद, लाइक मेरा इंटरव्यू 8 को है तो 8-9 के बाद आप अपलोड कर दीजिएगा। अच्छा, उससे उससे पहले इंटरव्यू के पहले मैं उससे पहले क्या दिक्कत हो जाएगा? उससे पहले मैं यूट्यूब पे वीडियो देखूं, लाइक वो देख के मुझे वो लगेगा तो आप 8 या 9 को कर दीजिएगा आप इंटरव्यू अपलोड। चलिए ठीक है आप श्रेया, रेडी रखिए आप। और कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं पूछना। चलिए ठीक है श्रेया, हमारी तरफ से ढेर सारी बेस्ट सर विशेष ड्रेस कोड के लिए सूट सही रहेगा ना सर? हाँ, गर्मी का टाइम है, आप एकदम आसानी से कंफर्टेबल कॉटन वाले ढीले वाले कपड़े पहन करके जाइए जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, ठीक है? और यस बहुत सर। ज़्यादा ऐसे डार्क वाला कलर ना हो, मतलब लाइट कलर रहेगा तो ठीक रहेगा, यस सर। क्योंकि गर्मी बहुत सर ज़्यादा ये होती है। सर दिस कलर एंड दिस सूट इज ओके। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली ये अच्छा है। सिंपल। ये फैब्रिक ठीक है और इसका कलर ठीक है, आप इसको पहन के जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ठीक है श्रेया, ओके सर। बहुत ढेर सारी बेस्ट विशेस ओके फॉर योर थैंक यू सर, इंटरव्यू। अच्छे थैंक यू तरीके सो से आप मच सर। इंटरव्यू दीजिए, और बाकी अगर इन बिटवीन कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? ओके थैंक यू सो मच ओके, गुड नाइट। सर।